Hello everyone, this question appears in class 6 NCERT chapter of playing with numbers. This is 12th question of its exercise 3.2. So the question says that fill in the blanks. A number which has only two factors is called a. So two factors क्या हो जाएंगे हमारे 1 and the number itself. So होता है हमारा prime number. A number which has more than two factors is called. ये जगह हमारा composite number. One is neither prime nor composite number. क्योंकि वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सो प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7. सो स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर 2. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सो 1 हमारा ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है. 2 and 3 हमारे प्राइम नंबर होते हैं. सो 4 से हमारे कंपोजिट नंबर स्टार्ट होंगे. सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सो हमारा स्टार्ट होता है नंबर 1 से 1 2 3. 1 odd है, 3 odd है, so smallest even number is 2. So smallest even number is 2. That's the final answer. Thank you.